In this module, we will review the steps which are involved in delivery creation and delivery document in sales process. Now, having knowledge and deep understanding of these concepts are extremely important. उसकी reason ये है कि for example you are hired in marketing and sales department and you have to manage all the customer orders, और उसके साथ साथ जो information associated with those particular customer order उसको भी manage करना है. लेकिन having an understanding about how actually things work is also important. So इस module के अंदर we will review कि delivery creation और delivery document के अंदर what are the data elements that needs to be involved. इन data elements की understanding का मतलब ये हुआ कि you will be having a deeper understanding कि जब कस्टमर का ऑर्डर आया, कस्टमर को कोटेशन गई, सेल ऑर्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर चेक हुआ कि वो सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. नाउ इट इज अ टाइम टू मूव दैट इंफॉर्मेशन टू डिलीवरी कि ठीक है हमारे पास अवेलेबल स्टॉक्स मौजूद है और नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए डिलीवरी डॉक्यूमेंट. लेकिन उसके साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर कि डिलीवरी क्रिएशन के दरमियान हम किसी डेटा एलिमेंट को मिस ना कर दें. अगर कोई डेटा एलिमेंट विच मस्ट बी रिक्वायर्ड इन द ओवरऑल प्रोसेस तो डेफिनेटली देयर विल बी गैप्स इन इंफॉर्मेशन. उन गैप्स का मतलब यह होगा कि द इंफॉर्मेशन इफ इट इज इनकम्प्लीट, इफ इट इज मूव्ड ऑन टू अनदर स्टेप, तो उसके बाद जब इंफॉर्मेशन गैप होगा तो देयर विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेक ए डिसीजन ऑन दैट स्पेसिफिक गैप. तो आइए रिव्यू करें कि डिलीवरी क्रिएशन के दौरान, नाउ रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, और उसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट डिलीवरी क्रिएशन और कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले वी हैव टू चेक ऑर्डर्स एंड मटेरियल्स टू डिटरमाइन इफ ए डिलीवरी इज पॉसिबल. क्या वो आइटम जो कस्टमर मांग रहा है वो क्या हमारे पास मौजूद भी है कि नहीं. उसके साथ साथ कंफर्मेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी. यू माइट बी थिंकिंग कि डू वी रियली नीड ए कंफर्मेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी. Now, for example, the people who are working in the warehouse, they do not inform you कि हमारे पास वो आइटम अवेलेबल हैं कि नहीं है. जो आप जहां इन्वेंट्री सारी स्टोर कर रहे हैं, अगर उसकी कंफर्मेशन नहीं आती और यू मूव ऑन टू अनदर स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, कि आपने कस्टमर को कहा कि ठीक है वी हैव द आइटम्स एंड वी आर गोइंग टू शिप दोज आइटम, तो देन दिस इज ए इंफॉर्मेशन गैप. So you must require a confirmation of the availability कि yes we have those items in our inventory. And then confirms export foreign trade requirements. Again, if you are shipping the item overseas, so you have to make sure that you are following all the foreign trade requirements कि अगर कोई specific packaging में या कोई specific item different kind of packaging के अंदर होना चाहिए या उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, तो यू आल्सो मेक श्योर कि व्हाइल यू आर इन द डिलीवरी क्रिएशन ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट. अगर कोई स्टेप यहां पे मिस हो गया तो देन यू हैव टू गो बैक. नाउ यू माइट बी थिंकिंग गोइंग बैक डज नॉट अफेक्ट. वेल, इट डज इफेक्ट द एक्चुअल डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर, क्योंकि जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचना था कोई स्टेप मिस हुआ तो यू हैव टू गो बैक एंड करेक्ट दोज मिस्टेक्स, जिसका मतलब है कि डिलीवरी डेट अब न्यू डिलीवरी डेट में चेंज हो जाएगी. उसके साथ साथ डिटरमाइन टोटल वेट एंड वॉल्यूम. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द वेट, वॉल्यूम, ट्रेड और एनी फॉरेन रिक्वायरमेंट हैव टू बी मेट. जनरेट्स पैकेजिंग प्रपोजल. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा आइटम है विच इज फ्रेजाइल, वो बहुत आसानी से टूट जाता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि इस तरह की पैकेजिंग उसके लिए यूज की जाए ताकि वो आइटम टूट ना सके. तो जनरली द आइटम विच यू हैव टू सेंड टू द कस्टमर, इफ दोज आर फ्रेजाइल, सो यू मेक श्योर कि पैकेजिंग आर इन सच अ वे ताकि वो आइटम ठीक तरीके से कस्टमर तक पहुंच जाए. कैलकुलेट्स वेट्स एंड वॉल्यूम. So you have to make all the decision at this point at the delivery creation. Now, in ERP software, if you are managing all this information, many ERP systems allows you to do this task there and then.
آپ کو کوئی ایڈیشنل اسٹیپ نہیں کرنا پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ سسٹم ہی آپ کو پوچھتا ہے آپ سے کہ یہ ساری ریکوائرمنٹس کیا آپ نے کمپلیٹ کر لی ہیں. اگر کمپلیٹ کر لی ہیں تو واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ چیک اسکیجولنگ کے آئدر یو یوزنگ بیکورڈ اور فارورڈ اسکیجولنگ. کنسیڈر پارشل ڈلیوریز کہ وٹ ٹائپ آف شپنگ میتھڈ یو آر یوزنگ، کہ آپ نے 4 سیل آرڈر کے ساتھ ایک ہی ڈلیوری کرنی ہے یا پارشل شپنگ کرنی ہے یا اوور کمبائن کر کے اسے شپ کرنا ہے. تو وہ ساری انفارمیشن بھی اس پوائنٹ کے اوپر ڈسائڈ ہو جائے گی. اپڈیٹس راؤٹ اسائنمنٹس اینڈ اسائنز پکنگ لوکیشن. تو دیز آر آل دی ڈیسیژن وچ ہیو ٹو بی میک ہیئر ایٹ دی پوائنٹ آف ڈلیوری کریشن. ڈیٹرمائن بیجز کہ آپ نے کسٹمر کو بیجز کے اندر بھیجنا ہے یا ایک پوری جو پروڈکٹ ڈلیوری ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوگی. کوالٹی چیک اف اٹ از ریکوائرڈ اینڈ اپڈیٹ سیل آرڈر. سو آفٹر making sure all these steps are followed, you also have to update the sale order, which mean information is shared, it is integrated, and the information after completing this information, you have to go back and update the sale order. Generally, it is done automatically because you are following all the steps and all the data elements. Uske baad we are talking about the delivery document. It initiates the delivery process and is the control mechanism for this process, which includes picking. کہ کریشن ہو گئی ہے ڈلیوری کی, وی ہیو ڈیسائڈیڈ آن آل دا ڈیٹا ایلیمنٹس, کب وہ پک ہونا ہے, کیسے پیک ہونا ہے, کب لوڈ ہونا ہے, اور وین وی آر گوئنگ ٹو سینڈ دوز پرٹیکولر گڈس ٹو دی کسٹمر. سو آل دیز انفارمیشن ایلیمنٹس آر امپورٹنٹ. ون وے آف تھنکنگ مائٹ بی کہ ڈو وی ریئلی نیڈ that much detailed information? Now, if the company and the product lines they are offering to the customer is huge, either it is a small, medium or enterprise level company. Now, depending on the needs and the scope and the product lines, you can make the informed decision کہ کون سا ERP software ہم نے use کرنا ہے. Now, if we talk about the major ERP solutions which are available in the market, اس کے اندر the process is standardized. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دے ہیو آلریڈی تھاٹ اوور آل دی اسٹیپس وچ یو نیڈ ٹو فالو. اف یو مس اینی اسٹیپ وچ مین دیر از اے انفارمیشن گیپ. ناؤ انفارمیشن گیپ لیڈس ٹو کنفیوژن, اٹ لیڈس ٹو بیڈ ڈیسیژن میکنگ. ناؤ آرگنائزیشن اینڈ دی امپلائی ہو آر ورکنگ ان دی آرگنائزیشن, if they are concerned about the performance, productivity and satisfying the customer, so they have to make sure that they follow all the standardized procedure, fill out all the information and make sure the customer is happy, and the way they are serving the customer, in the end customer feedback is good.